हाय मिकासा, हाउ आर यू? कैसे हो मिकासा तुम? अरे हम भी ठीक हैं। ये अरे डीमन श्रेयर ख़त्म हो गया यार। ये उसी के सदमे में है अभी हम कि अब आज नेक्स्ट मंडे को ये एपिसोड नहीं देख पाएंगे हम। कितना अच्छा एनीमे भाई। एनीमे की ना ये बात बहुत बुरी महसूस होती है मुझे कि उनकी एंडिंग आ जाती है कुछ एपिसोड्स के बाद। अब नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट पता नहीं नेक्स्ट ईयर भी आएगा कि उसके बाद आएगा। वेट करते हो। मैं तो सेकंड सीज़न वेट कर रहा था, सोचा था डेथ नोट का कोई सेकंड सीज़न आएगा या गामी नहीं होगा, बट हो सकता है जैसे कि उसका डेथ नोट का जो लाइव एक्शन कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया हुआ है उसमें क्या है, नाइट येगामी का सन होता है मीसा माने के पास, वो रिवेंजिंग होता है। बट एनिमे में वैसा कुछ नहीं आया। सैड सैड सा महसूस हो रहा है, पता है कंग मेरे को इतना एम्प्टीनेस जैसा महसूस हो रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो वो क्या मिसिंग है पता नहीं। बाद में समझ आया कि डीमन श्रेयर्स ख़त्म हो गया इस वजह से। अरे तुम्हारा एपिसोड कब आएगा? तुम्हारे एपिसोड का भी वेट कर रहा हूँ। अच्छा एओटी का तो लास्ट सीज़न है ना ये? अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीज़न है मेरे जितना मुझे पता है। अटैक ऑन टाइटन का भी लास्ट सीज़न है भाई। एनिमे कितने सारे एनिमे एंडिंग के सिचुएशन में पहुंच चुके अपने। ट्रैवलर को भी मैक्स करना है, पता नहीं वो एओटी का कब आएगा लास्ट सीज़न का एपिसोड। अरे ये तो है पर कुछ तबाही तो होगी तभी वो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चाहिए मुझे जिन को, ओ ये चाहिए, ये तो बन जाएगा जितना ये बन जाएगा आई गेस। बरूटो भी खत्म हो जाएगा। बरूटो मैंने देखा ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे बरूटो पसंद नहीं है, पर मैंने बरूटो के वही एपिसोड देखे जिसमें नरूटो होता है। क्या बनाना था मैं भी। अच्छा इनकी लोकेशन देख सकते हैं हम यहाँ से। हाय निगेश, बीजमाई में आजा भाई। बीजमाई में अभी नहीं, बाद में आएंगे शाम को थोड़ा लेट। ये तो है बरूटो की मांगा तो पीक पे है, इनकम तो हो ये बरूटो वालों की। बट ये है कि एनिमेशन में उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, पता नहीं क्या है ये। मुझे इसको मारना है एक बार, मिशन है ये, मेरे को एक बार मारना है इसको। बट मैं मार नहीं सकता इसको क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स अभी उतने हाई लेवल के नहीं है। वोंटेज गेमर हैंगो भाई, कैसे हो वोंटेज गेमर भाई? अरे लाइक कर दो, जो जो अभी आया है लाइक कर दो हाथों हाथ, बाद में तुम सब घूम जाते हो।
एनिमेशन तो उनकी अच्छी है, बट उन्होंने ना जो मेन कैरेक्टर थे ना, जो नारुतो के थे, तो इन्होंने ना बोरुतो को पावर अप करना था, तो वो तो सही था। देखो तुम्हारी जैसे एक वो होता है ना कि तुम्हें बोरुतो को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो समझ आता है, बट उसके लिए तुम्हें नारुतो को नर्फ करने की क्या जरूरत थी? तुम बोरुतो को स्ट्रॉन्ग कर देते। इन्होंने नारुतो को नर्फ करके बोरुतो को स्ट्रॉन्ग किया। नारुतो का कुरामा गायब हो गया, वो मांगा में भी था, समझ आता है। सासुके की रेनिगान गायब कर दी है, और बाकी कैरेक्टर्स भी थोड़े बहुत वैसे कर दिए हैं। माई जेंशिन आईडी भाई बोंटेज भाई, एक मिनट, ये डायमेंशन की बात देखते हैं। अरे मैंने पढ़ा नहीं था उसमें, इंगेक्टो कंफर्म होगा, इंगेक्टो चाहिए था मुझे एक। बोरुतो टाइम स्पेस मांगा भाई, मैंने बोरुतो नहीं देखा है, सीरियस नहीं बताओ। मैंने बोरुतो के वही एपिसोड देखे जिसमें नारुतो सासुके होते हैं, या फिर सासुके हो या तो नारुतो, दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। स्टार्टिंग के मैंने 25 एपिसोड देखे थे बोरुतो के, और उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था। बाद में जो नारुतो हाइप वाली वीडियोस थी वही देखा मैंने। 88565539 88565539 वोल्टेज, ये वही तुम्हारी आईडी। इसमें देखो क्या, मुझे समझ नहीं आया, देखना क्या इसमें। एडवेंचर गैंग 45, आई गॉट काजो जस्ट 20 पीटी 20 पीटी। सेम भाई, मैं अपना पीटी हाई गया था, फिर मुझे काजो तब भी मिल गया। मेरा 34 डेज हो गए जेंशिन खेलते हुए। वाह, मेरा ऐसे हुआ था, जब मैंने पीटी स्टार्ट किया ना, तो मैं 50-50 हाई गया। मुझे 50-50 में मोना मिल गई, मोना के बाद मुझे काजुआ मिल गया, काजुआ को मैंने लगभग 40 किया तो मुझे एक वो मिला, इसका कूपन, ये कूपन मिला मुझे, और मैंने उस एक कूपन से ओपन किया तो मुझे जीन मिल गई। मतलब मेरे 3 5 स्टार निकले हैं कॉन्स्टेंट वे में। हमें कौन सा चाहिए इसमें? रिकमेंडेड इंगक्टो तो हमें चाहिए होगा। Don't tell me they did it again. अरे शिट मैंने ना, एक मिनट इसके बात करता हूँ। Into the wind. You're toast! At the frying pan. कितने सारे मॉन्स्टर है भाई? The wind knows me. हो गया, इतना ही करना था हमें। अरे यार ये भी तो है, ये मुझे सबसे गंदा लगता है जिनके शींग डबांगे जो होते हैं। Into the wind. कंप्लीट हो गया। ये मैं 3 करने हैं, ऐसे छोटे हैं शायद, वो डायमेंशन, वो मैं एग्जिट कर रहा था।
उसकी एचपी बढ़ानी पड़ेगी। अरे हम डायमेंशंस कर रहे हैं, कुछ रिकमेंडेड डायमेंशन है जो हमें हमारे क्या कहते हैं इसको नोटबुक में से मैं क्या है ये एक मिनट देखता हूँ। वो डायमेंशन कंप्लीट करने हैं हमें। 3 डायमेंशन हमारे पेंडिंग में अभी यहाँ पे ये है ना, ये 3 डायमेंशन है कंप्लीट। हुआ नहीं क्या? कौन सा डायमेंशन में नहीं है अभी? ओ ये तो डोमेन्स की डिटेल्स है। डोमेन्स है, डायमेंशन क्या है? डोमेन्स है, ये 3 है। ये कौन सी है? इसी पे तो मैंने कर तो चुका इसे। ओके मुझे सारे करने क्या ये सारे करने पड़ेंगे? योइमिया और कागज मुझे पता नहीं है, मेरे को ज़्यादा दिन हुए नहीं गेम में। मेरा 34 डेज़ हुए बस मुझे गेम में, तो इतना कुछ मुझे पता नहीं इसके बारे में इस गेम का। तो जो भी है यही है, मैं धीरे धीरे मतलब खुद से सीखना चाहता हूँ। मैं ऐसे ना वीडियोस या फिर किसी की आईडी विजिट लगेगी ना, उनकी टिप्स नहीं चाहता, मैं खुद के एक्सपीरियंस से देखना चाहता हूँ कि क्या कैसे होता है। अब तक मैं जितने भी अटैक्स जितने भी कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ वो सारे मैं अपने खुद से सीखे हुए हैं। स्टडी विद मी भाई, एक सेकंड में देखता हूँ तुमने क्या कहा। बीजीएमआई में नहीं है, मैं बताया था भाई। मैं तुमको मैंने आईडी, तुमने मेरे को आईडी पे रिक्वेस्ट भेजे, मैं आऊँगा कैसे? मैं तो आया था भाई दोपहर में, तो मैं आया हूँ बीजीएमआई में। बीजीएमआई में मैं आया हूँ भाई। तुम नहीं आए उस टाइम, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। मैं देख कैसे पाऊंगा कि तुम आए हो कि नहीं? ये फ्री कंप्लीट हो गया यार, इसे कंटिन्यू का ऑप्शन कहाँ से आएगा? Nice and spicy. Absorption test. Freeze! Don't push your luck. Cool it. Boba, get them. Stand clear. That's not right. Enhanced animal module 75.
Don't break my glasses! Out of the frying pan, into the fire! This moment will be frozen in time. Freeze! And, absorption test! Cool it! And हाँ स्टडी विद मी भाई, मैंने तुम्हारा कमेंट देखा है। मैंने बताया तो तुम मेरे फ्रेंडिंग लिस्ट में नहीं हो ना बीजीएमआई में, तो मैं इनवाइट कैसे करता तुम्हें? फ्रेंड में हो ही नहीं तुम मेरे। give up. Nice and spicy. Don't waste my time. Freeze! Gooba, get them! Cool it! Out of the frying pan, into the fire! Rude. Give up. Your life is mine. Don't waste my time. Nice and spicy! Dodge this! Oh, I'm so sorry. Freeze! Gooba, get them! हाय पवल भाई, कहाँ हो? मेरा आईडी दो क्या? हाँ तुम अपनी आईडी सेंड कर दो स्टडी विद में भाई। अरे मुझे ट्रेन करने का ऑप्शन है यार, मुझे करना पड़ेगा, मिशन है। Out of the frying pan, Cool it! Freeze! eat this! Nice and spicy! Cool it! Don't get frostbite! Dodge this! Submit. It's nothing. Freeze!
Don't waste my time. Cool it! Ah! Your life is mine. Booba, get them! It's nothing. Oh, so sorry. Ha! Nice and spicy! अरे मतलब वो बीजमाई की आईडी देगा यार। अरे समझ नहीं आया कैसे ट्रेनिंग हो गई, पता नहीं कितना गंदा कॉम्बिनेशन दिया है इसने। ऐसा कॉम्बिनेशन कौन देता है? What's the... Dodge this! Nice and spicy! Don't waste my time. Freeze! Booba, get them! Dodge this! This moment will be frozen in time. Cool it! Submit. It's nothing. Dodge this! Cool it! Nice and spicy! You're toast! Don't get frostbite. Dodge this! Give up. Freeze! अरे कैसे आसान है भाई, समझ नहीं आया है। एक तो इसने रैंडम कैरेक्टर दिए हैं, पता नहीं क्या ही दिया है भाई। ये कॉम्बिनेशन कौन यूज़ करता है भाई? Booba, get them! Cool it! मुझे ना ये तो अपने सुपर मूव्स ना चार्ज मूव सेव रखने पड़ेंगे। It's nothing. Nice and spicy! Freeze! Oh, so sorry. I'm the right man! Submit. Don't waste my time. Cool it! एक सेकंड यहाँ पे आओ, सब कोने में आओ, तुम सब पता नहीं वहाँ पे क्या करो, कोने में आओ। Freeze! Give up. Your life is mine. नहीं भाई, बीजेएमआई की लाइव स्ट्रीम नहीं करना भाई मैं। Cool it! It's nothing. मैं चार्ज अटैक सेव रखा हूँ नेक्स्ट टाइम में करने के लिए। ओके Don't waste my time. Don't get frostbite. Submit. Give up. Nice and spicy! Dodge this! अरे यार इतना विंड, पता है मैं हमेशा से एनिमो कैरेक्टर यूज़ करता हूँ भाई, जो क्राउड कंट्रोल कर सके। और ये बिना क्राउड कंट्रोल किए ना कोई भी मेरे से नहीं हो पाता है। Nice and spicy!
Oh, so sorry. Cool it. Booba, get them! Racing! You're toast! Freeze. Submit! Nice and spicy! Dodge this. Freeze. भाई मैंने कहा बैट बैट ये नहीं कहा मैं डोमेन डोमेन का मिशन छोड़ो या क्या कहूँगा बिना स्ट्रीम के पता नहीं क्या ही करना है इसके अंदर। लगता है मुझे वो फूड वूड यूज़ करना पड़ेगा जिससे डैमेज इंक्रीज हो जाए थोड़ा। डिफेंस का तो टेंशन नहीं है, डैमेज इंक्रीज करना पड़ेगा बट मुझे। अरे ये हो सकता है कि टीम में नहीं कर सकता है किस, मैं बताता हूँ ठीक है। अरे यार क्या भाई निंगवान के साथ कौन सी टीम बनाई है भाई, ऐसे कौन टीम की कॉम्बिनेशन देता भाई। ये करना है मुझे, ये तीनों इसी के अंदर है, इसी तीनों डोमेन इसी में है। क्राउड कंट्रोल के लिए एक तो कैरेक्टर दो यार, ये पता नहीं क्या दिया है। बताओ स्टडी विद मी भाई, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम, क्या टेक है। हाँ 2 मिनट प्लीज, ठीक है। ये क्या कॉम्बिनेशन दिया है भाई इन्होंने, निंगवान दिया है भाई। मास्टर क्रिस्टलाइज रिएक्शन बिटवीन जियो एंड हाइडो पायो इलेक्ट्रो थ्रू द दिस चैलेंज। तुझे पहले पायो यूज़ करना है, फिर जियो यूज़ कर, फिर जियो यूज़ से इससे पायो शेड बन जाएंगे, उसको यूज़ कर। ओके कुछ समझ नहीं आया बट मतलब वो शार्ट से बन जाते हैं ऑरेंज से। ओके देखते भाई। तो काया क्या करने दिया, काया सिर्फ यार क्या घटिया कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन सिखा है क्या हमको यहाँ पे। पहले तो सब इधर आओ भाई, कोने में आओ, सबके सब एक कोने में आओ। Race you! I'm the frying pan. भाई यूज हो जा भाई। Booba, get them! Give up! Cool it. Freeze. I'm the frying pan. Into the fire! Cool it. Don't waste my time. भाई यूज हो जा भाई। Don't get frostbite. Freeze. Booba, get them! Your life is mine. It's nothing. Cool it. बाहर आ जाओ 1 मिनट। समझ नहीं आया यार ये अजीब है भाई, इतने हैवी कैरेक्टर यूज़ करने के बाद तुमको ऐसे कैरेक्टर यूज़ दें। मैंने मदद करता हूँ। इसमें को का ऑप्शन होता है क्या, को का ऑप्शन कहाँ है भाई इसमें।
एक सेकंड चेक करते हैं। देखता हूँ, आ जाओ आ जाओ। सोंगो डोमेन है तो इसमें फिर तुम कौन सी मदद करने जाओगे इसमें? अभी मैं तो स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा इसको अब। डैम, तुम कुछ और कहते हैं। अब ये कितने हैं? 15 हैं। अच्छा, वो किससे मिलते हैं? वो कहाँ पे था? ये है क्या? काजुआ का जो वो है जिससे हमें काजुआ के लिए वो मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स, वो कौन सा डोमेन है? कौन सा है? ये है क्या? मैं मदद करता हूँ। ये सोंगो डोमेन है, वो मेरी चैट पे ध्यान देता। मैं देखता हूँ, ये सोंगो डोमेन है, मुझे समझ गया मैं। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. आगे काम आएगा। अरे मुझे ये तो बताओ, काजुआ वाला डोमेन कौन सा है भाई? अच्छा, मैसेज दे तो मम्मी, ये जियो शील्ड है। Don't ओके waste my time. ओके। उसके बाद Time to go. It's nothing. Give up.
the happiest. Into the wind. Time to go. As one with wind and cloud. Wind Strider. Give up. Everybody, Don't waste my time. Time to go. ओके ओके, अब ट्राई करते हैं, उनका भूत बनाते हैं। out of the frying pan, into the fire! Boba, get them! Give up. Out of the frying pan, into the... Don't waste my time. Fire. Nice and spicy! Freeze! Ha! Ha! Ah! Ha! Ha! Cool it! Give up. Your life is mine. You're toast! Don't waste this. It's no. Boba, get them! This moment will be frozen in time. Submit. Don't waste my time. Give up.
Dodge this. अरे ठीक है समझ गया मैं, दिख गया मुझे, वही मैं कर रहा था। मुझे पे ना कायगो का करेंगे तो उसके बाद उसे कहेंगे। Cool it. It's nothing. Freeze. Dodge this. Give up. वो बना नहीं। कितना बचा है कायगो का? आया? अबे यार हो जा भाई। Freeze. Don't get frostbite. हो जा यार। निंगवान का चार्ज अटैक, वो ये अटैक चार्ज होने में बहुत टाइम लग गया है। Don't waste my time. अरे बनेगा तो सही पहले। Dodge this. Give up. चलो भाई अब पाएगो के बारे है। Don't waste my time. मारो बे मारो। मारो बे। एक ना एक गया जाएगा यार। एक काम भाई फास्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये बहुत वो है, अजीब है। हे भगवान, क्या वही तो मैं भी क्यों भाई, हे भगवान क्या कर रहे हो ये। तू आजा इधर, आजा सबके सब इधर। एक जगह ठक्का नहीं होते ना यार, ये एक साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए मुझे। एक तो काया भी बेवकूफ़ है भाई, एक 2-3 पे कर रहा है। चलो एक ये तो हुआ, हमारे तो डिफेंस भी करते हैं तो साथ में। Dodge this. ओ भाई Oh, so sorry. यार एक और बचा है बस। निंगवान बेवकूफ़ कहीं की। Your life is mine. Don't waste my time. Cool it. Nice and spicy. ओ भाई निंगवान पे आजा भाई। चलो ठीक है। Out of the frying pan, into the... अबे पीछे बनी भाई, बनी बेवकूफ है भाई। उसके पीछे बंदा खड़ा, वो मेरे मुझे पे अटैक कर रहा है। क्या ही बनी है वो, हो गया बट। और मुझे इनका ना, मुझे इनका क्रिस्टन सिर्फ शील्ड से बनता है, अटैक से नहीं बनेगा, पर बन गया दोनों से। अरे मुझे नहीं पता था यार, शील्ड मुझे इनका सिर्फ शील्ड से ही क्रिस्टन बनेगा, तभी तो मैं वेट कर रहा था। और ये बनी भाई, बनी मेरे पे अटैक कर रहा है, उसके पीछे एनिमी वो मेरे पे अटैक कर रहा है भाई। उसका दिमाग भाई कितना क्या है भाई, कोमा में जा गया हुआ क्या बनी ये। एक मिनट अभी हो भी है। अरे यार एक सेकंड, मैंने एक सेकंड मैं एक्सेप्ट नहीं किया मैं यार। एक सेकंड, ये इसका हो जाए। मेरे 150 प्रीमोज बचे हैं। इट्स ओम, हाय भाई ओम भाई, कैसे हो? समझ गया भाई। इसका तो ये तो अटैक बहुत पैंगे साथ है। इसमें क्या करना है, फोर्स करना है बस। इसमें तो चैंपियन हूँ मैं। कहाँ है I'll protect us. सब? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ सब, आ जाओ चुपके से पीछे पीछे आ जाओ सब। Freeze. Freeze.
अबे बाबा भाई कहाँ है? Dodge this. Cool it. यार ये बड़ा अजीब मिशन होता है। क्यों ये हो गया? Dodge this. ओ भाई अब हो जा। अरे पीछे है बाबा, कहाँ मार रही तू? Keep trying. Let's dance. Don't get frostbite. बाबा भी ना कभी कभी उल्टा सीधा काम करते हैं। तुझे बाबा भी यूज करनी नहीं आती। अबे बाबा यूज कर तो भाई, देखे एक बार में। भाई नाइक कर दो, नाइक। ओम भाई जो भी आए हैं अभी अभी नाइक कर दो। अरे बाबा तो आती है भाई, बाबा तो मैं हर दिन यूज करता हूँ। अरे हो गया भाई, ये भगवान है इतना। भगवान भाई, भगवान इतना फोकस करेंगे ना मेरे पे, इतना तो मैंने भगवान से नहीं कहा भाई मेरे पे फोकस करने के लिए। इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रो चार्ज, ये तो आता है आई गेस। इलेक्ट्रो चार्ज हो जाना चाहिए। भाई टैंगन पढ़ अपने सारे कैरेक्टर के। हाँ मैं समझ गया। भाई ऐसे बेइज्जती करे हो भाई, तुम ऐसे बेइज्जती करोगे। आओ आओ सब, इस कोने आओ सब, मेरे पास आओ। I'll protect us. Come a little closer. You're in for a little shock. Don't be such a brute. You're in for a little shock. You're in for a little अबे रुक जा भाई। Come a little closer. अब सही यूज किया तूने। एक सेकंड की है। अरे होता है। हो है, दे दे जो भी हो है। इट्स भाई हो है भाई। भाई इतनी भी तारीफ मत करो भाई। अरे पता है मुझे ना ये एंगमेंटल रिएक्शन सिखा रही है ये सारे। Freeze! Come a little closer. Dodge this! Freeze! Come a little closer. You're in for a little Cool it!
will be frozen in You're in for a little shock. dodge this. Come a little closer. Freeze. मैं मेन टीम के साथ आऊँगा ना, ये 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे ये जो भी है मॉन्स्टर्स। हो भाई आज की वीडियो की क्लिप डांग दिया। अरे नहीं भाई, पीटते हुए नहीं डालूंगा मैं, पीटते हुए डांग दूंगा यार। मुझे दिन में याद नहीं रहता यार क्लिप डांगना। बढ़िया नहीं भाई, बहुत गंदा पीटूंगा मैं। 1 सेकंड में हो गया क्या ये? वेपराइजमेंट ओवर मोड, अभी ये भी कब आएंगे भाई? ये अभी तक आए नहीं क्या? 150 प्रीमोज आ जाएंगे मेरे पास। ओवर मोड, मैंग टू वेपराइज, ये तीनों करने हैं। ओवर मोड, अच्छा ये तो इजी है। ओवर मोड तो ये तो इजी है, आई गेस इजी होगा। Boba, get them! You're in for a little shock. Come a little closer. Out of the frying pan, into the fire! Nice and spicy! Come a little closer. Out of the frying pan! Help! My dinner is attacking me! यार ओवर मोड तो इजी था भाई। एक बार उस पर आग लगा दो, उसके बाद उसको डैमेज देते हो। ये सही था, ये इजी था भाई, ये सच में इजी था। वो मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया अभी? फिर से भेजो प्रभव भाई। मैंने एक्सेप्ट तो किया था मैंने। प्रभव भाई फिर से भेजो, ये ज्वाइन करूँगा मैं। अच्छा अरे ये इजी है यार, मतलब मेरी ना हैबिट नहीं है। मैं एनिमो यूज़ हो, तुम्हें पता है मैं मेन हमेशा से एनिमो यूज़ करता हूँ मैं। क्राउड को एक जगह गैदर करना। ओ भाई
Hi Aqua, how are you? Welcome back. The world remains constant over the centuries. But human life is like the dew. There is no escape! Ha! Time to go. Sir. मैं अभी स्टार्ट करूँ मैं अपना नया एंट्री बनाएंगे यो भाई, डोंट वरी, स्ट्रीम पे होगा. कैन आई जॉइन यो भाई? मैं अभी ये कहो डोमेन्स कहो थोड़े से ये बना ये सोंगो डोमेन से ये कह के थोड़ा सा टाइम बचा है, मतलब 2 बार वो मुझे करना ही है, उसके बाद आ सकते हो. मैं आता हूँ ठीक है भाई. अरे यार मुझे ना माई स्टार की याद आ जाती है एक्वा का नाम पढ़ते ही. Race you! What's the hurry? Nice and spicy! Out of the frying pan, it's... Cool it. Nice and spicy! Dodge this. Oh, so sorry. Booba, get them! Freeze. यार 60 एक्वा भाई का. ओ भाई नाइस. मेरा तो 45 है, 46 है, आई मीन 46 है यार. 60 भाई. तो भाई एक और बार डोमेन करना है मुझे, उसके बाद ज्वाइन करते हैं. ये लास्ट है आई गेस. ये बेसिक डोमेन है, मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया ये? कितने आज 35 दिन हो गए, आज जाके मैं ट्राई करूँ ये. अच्छा ये मैं वो हो गया वेबराइज, ये तो इजी है वेबराइज. Out of the frying pan, it's... Booba, get them! Out of the frying pan, into the fire!
then. Hi. Boba, get them! Let's dance. एक्वा भाई अपनी आईडी बताओ, मैं सर्च कर दो तुम्हारी आईडी। एक्वा ब्रो आईडी। One with nature. Time to go. नाइस करो जो भी देख रहे अभी नए नए। एक सेकंड में बना जस्ट चेक कर दो ये आईडी। Wind Strider. अब डैंडो का बचा हुआ है। अब डैंडो का बचा हुआ मेरे को करना है। डैंडो का कैसे क्या क्या बचा है, एक सेकंड। एसेंस अ डैंडो कैरेक्टर अदर देन द ट्रैवलर फेस 2। मैं समझा नहीं इसमें क्या है। एसेंस मतलब तुम्हारे पास एसेंस करो कोई भी अडेंडो कैरेक्टर अदर देन ट्रैवलर फेस 2। व्हाट द हेल भाई, मैं डेंडो ट्रैवलर को एवं 2 करना है या फिर दो कैरेक्टर चाहिए मुझे डेंडो के बिना? नहीं, दो कैरेक्टर डेंडो के तो मेरे पास हैं। डेंडो कैरेक्टर को एवं अप करना है क्या? Yai Publishing House has released numerous works that lay out military strategy. Oh, in Pratik Saab, simple bro, and welcome pragmatic back. way. Wherever Those are in my this world favorites. ओके मुझे इसको मतलब डेंडो ट्रैवलर को Wind Strider. There are leaves क्लस्टर 2 करना है क्या? C2 करना I है? know just the tune to accompany. आज भी अच्छी ग्रोथ हुई चैनल की। अरे भाई सही है, ऐसे तुम्हारी जैसे हुई वैसे हमारी भी होती है तो मज़ा आ जाए।
Wherever in this world I roam, last link I have to the land of my birth. ये तो है, बट ये कि जेंशिन इम्पैक्ट ट्रेंड में तो नहीं है। ओके, कोमिंग कहते हैं मेरे पास। किसको इसको नेबंग 2 करने के लिए क्या क्या If you wish to hear it. हाय चंदन वो कैसे हो, क्या कर रहे हो? अरे जेंशिन इम्पैक्ट, अरे मेरे पास ना रेजेंस नहीं है तो मैं बॉस नहीं मार पाऊँगा अभी। रेजेंस नहीं है मेरे पास, मुझे इससे करना पड़ेगा। मैं मार्क किया था मैंने कहीं पे, ये है ना, रेजेंस नहीं अपने पास। कोई एक चूज़ कर, रेजेंस नहीं है ना मेरे पास, तो मुझे यही करना पड़ेगा अपना। इसके मटेरियल, मैं मटेरियल चेक कर रहा था किसका मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है। तो पहले मैं ना ये कैरेक्टर चेंज कर दूँ इससे, क्योंकि मेरे पास रेजेंस नहीं है। मैं कोई भी कैरेक्टर चूज़ करूँ वेस्ट हो जाएगा वो, और मैं अभी वो नहीं करना चाहता अपना। पर जाएंगे रेजेंस कहते कि क्या कहते हैं उसको नहीं वेस्ट करना चाहता अभी। मेरे पास इसके वो पड़े हुए रिसोर्सेस। मुझे बस थोड़ी सी ये चाहिए, रेड वाले जो होते हैं। ये तो एप्पल है यार। इधर जलते हैं, इधर होगा, सामने होते हैं शायद। आर्टिफैक्ट्स नहीं, आर्टिफैक्ट्स अभी मैंने फार्म नहीं किया। मतलब मैंने मैक्सिमम किए हुए, थोड़े बहुत बचे मेरे। मैं बॉसेस फाइट कर रहा था अपने 80 करने के लिए। मैं बॉस कैरेक्टर जो थे वो 60 के थे, तो उनको मैं 80 कर रहा था। इस वजह से मेरे को आर्टिफैक्ट्स फार्म नहीं कर पाया अभी। कहाँ है वो? यहाँ पे एक ट्री होता है पास में, देखो ये है। ये तो 3 ही यहाँ पे, मुझे 10 चाहिए। वो देंगे आर्टिफैक्ट्स मेरे को। इस हफ्ते का भी मैंने रेजेंस भी नहीं खरीदा अपना फ्रेजाइल टी पोर्ट से, वो भी ख़रीदना बाकी है। मैं अपना टी पोर्ट का नेबंग अप कर रहा था ना, तो मैंने उसके कॉइन्स वेस्ट कर दिए। मैं कम खरीदूँगा, मेरे पास 600 के नियर बाई कॉइन्स आते हैं हर दिन। मेरे को 1200 में मिल जाएगा एक कॉइन, एक रेजन मिल जाता है मुझे। तो पौधा कहाँ होता है किसी को पता है क्या? मैंने पौधा मार्क नहीं किया हुआ। नहीं दोनों ही नहीं है भाई मेरे पास, यानफी और कुकी दोनों ही नहीं है। मैं एक ये यहाँ पे ये भी बाकी है, एक वो है जियो किंग और यानफी कुकी दोनों ही नहीं मेरे पास।
Time to go. देख के बताओ। या नहीं नहीं, स्पॉइलर की तो कोई बात नहीं है, मुझे मत देना बस स्पॉइलर। Time to go. वो याद नहीं आया मैंने। मुझे ना ये भी मार्क का ही रखना पड़ेगा, ये वहाँ रिसोर्स भी। हर बार का ये झंझट होता है, जब भी ये चीज़ होता है ना मुझे 10 जगह भटकना पड़ता है। कहाँ फंस गया भाई, बाहर निकल। तुम्हारे मेरे ऊपर वांगा चैट ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे टी सुनाटे ने जिगाए को इग्नोर कर दिया था। भाई टी सुनाटे ने जिगाए को इग्नोर नहीं किया था कई बार उसने इसने ऐसे किया था ताकि ना वो जिगाए अपने आप को ग्रो कर पाए। और लाइक कर दो, मैं तुम्हारी चैट देखने दो 1 सेकंड के। तो मैंने एक सही टिप दी है ना तुम्हें, ये तो मैंने पढ़ा था Scenery is पर wonderful. Surely enough नहीं to ये वाला नहीं convince पढ़ा मैंने। anyone to become a कहाँ गया? wanderer. मैं बहु गो करने के लिए बीजमाई में ओंग वांगा माई को ओपन करो और अपने चैनल का नाम बोल दो, बहु सब्सक्राइब करने का। अरे कोई नहीं करता भाई, 1-2 आएंगे भी तो वो कहेंगे कि 1v1 करो। अगर पहले जैसे स्किन नहीं रहेगी भाई हाथ में मेरे। ये क्या बात हुई? माई सन माई मोस्ट सन, बात भाई ये क्या है? क्या कौन सा तुम्हारा सन गुम गया है भाई? भाई कहाँ है पेड़? भाई पेड़ पौधा कहाँ है ये? भाई इसमें रिसोर्सेज के लिए बहुत भटकना पड़ता है। नहीं ओची मारू थोड़ी ना था जिसकी डेथ हुई थी। जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई थी वो ओची मारू से पहले एक और पर्सन था जो उसे पसंद आया था, जिसकी डेथ हो गई थी। मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी आया था शायद। चंदन भाई कहाँ जाना है? 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी आया था। तो भाई यहाँ पे मार्क नहीं कर पाऊंगा मैं। उसके बाद उससे अच्छी माओ पसंद था ना शायद। अच्छी माओ का याद नहीं मुझे भाई। अच्छी माओ का तो नहीं याद है मुझे, बट ये था कि उसे कोई और पसंद तो था स्टार्टिंग में, जिसके बिंगी बिंगी हुए थे। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। चेस्ट की टेंशन नहीं है, चेस्ट ढूंढनी जाती है, जिसके बाद उसे वो पसंद आ जाता है। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? अरे यार इसका नाम क्या है? 1 सेकंड को यार। इसका ये लोकेशन मैंने मार्क नहीं किया यार। मेरे को ये मैं वैसे लोकेशन मार्क करेंगे तो मैप में जो मेरे को रिसोर्सेज ना कभी कभी मिलते हैं, जैसे कि ये है कहाँ गया माउंटेन की साइड। ये पिकैक्स वांगे साइन जो है यहाँ पे कुछ जगह पे कुछ हो, कुछ जगह पे कुछ हो है। कहाँ जा रहे हो? नंबर 4
मुझे कितने चाहिए? इसमें से एक उठा चुके क्या गलती से? अरे यार 2 कम है। Surely enough to convince anyone to 2 become कम a है, 2 wanderer. 2 करवा दो। एक सेकंड आया, यहाँ है प्रभव। नंबर 3 के पास नंबर 1 है क्या? हो गया भाई, ये भी मिशन हो गया मेरा। थैंक यू सो मच। Wow! इसको मैं सिर्फ गो कहूँगा क्योंकि मेरे पास एक भी वो नहीं है। Of my home. This blade. डेंडो एक भी नहीं है मेरे It is पास। the last link I have to the land of my birth. इसे कर दूँ क्या? अभी नहीं, बाद में देंगे इसे। बस बुक्स की तो कमी नहीं है। हो गया डेंडो भी। चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 का बचा हुआ है। नेवन स्टार 3 स्टार करना है, ठीक है। 3 स्टार जियो भी करना है, ठीक है। ओ भाई ये तो मैंने ये भी करने हैं भाई, बहुत सारे कैरेक्टर्स बचे हैं मेरे। हो गया। नोए में कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अभी के लिए तो काफ़ी है। ये नहीं है। हो गया अभी जो भी है। अब वो है जिनको तुम्हें उनसे करना पड़ेगा, रेजिन्स से। और मेरे पास रेजिन्स में वेस्ट नहीं करूँगा ना, अभी मेरे पास रेजिन्स ज़्यादा है नहीं। कम कर दूंगा मैं, रेजिन्स के साथ करने। बाकी ये है ना, Wonderful. मेरे पास अभी सिर्फ 11 ही है, Surely तो मैं enough to वेस्ट नहीं convince करना। anyone to become a wanderer. मैं सरीन टी पोर्ट में से मैं बाय करना है, तो अभी मैं मॉर्निंग में बाय करूँगा जिससे मुझे 60 रेजिन्स मिल जाएंगे। टी पोर्ट में मेरे पास अभी उतने कोइंस नहीं है। मुझे टोटल कोइंस चाहिए 1200 और मेरे पास अभी शायद 500 होंगे उसमें। मॉर्निंग में हो जाएंगे 700 कोइन आराम से। Time to go. अभी का तो हो गया, अभी तो जो भी करना था हो गया है। बॉसेस नहीं करने मुझे। यहाँ पे है, पता है मैं ऊपर ढूंढा था, यहाँ पे भी है बहुत सारे। मैं इस जगह को फूड सप्लाई मार्क किया होता मैंने। भाई तुम भाई सब मेरे पास आ जाते हैं, मुझे दिक्कत आ जाती है। तुम नंबर चैट नहीं पढ़ते हो। मैं चैट अभी देखा नहीं था 2 मिनट। इस सेकंड ये मार्क करो, ये सब ना भाग के आ जाते हैं मेरे पास। एक सेकंड अब इस चैट देखने थे सारी की सारी। आज शायद आखिरी दिन होगा डेली स्ट्रीम देखने का। एक हो गया क्या? और क्या क्यों कल स्कूल जाएंगे मेरे। मिनाटो गोट है भाई, मिनाटो तो गोट है भाई। देखो मिनाटो हो गया, ककाशी हो गया, इटाची हो गया, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो भाई अलग ही हैं। तो आज शायद आखिरी दिन है, कल से घूमेंगे। तो अगर मतलब कुछ देख आ जाना, रेगुलर मत आना, या फिर 1-2 दिन में आ जाना भाई। नंबर चैट पढ़ तो अगर नहीं, नंबर चैट ना ऊपर जैसे यहाँ पे नोटिफाई होता है ना मेरी स्क्रीन पे इस जगह पे, तो वो पूरा नहीं दिखता उसके अंदर, वो मिस हो जाता है। छोटे चैट जो होते हैं ना वो तुरंत दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, बस यही है कि इसमें बैठेंगे कैसे भाई।
अरे कोई बात नहीं, सैटरडे संडे जब भी मन करे, जब भी फ्री टाइम हो, द फोर्स फुंगी मत आना, जब भी फ्री हो तब आना, ताकि तुम भी इंजॉय कर पाओ, हम भी थोड़ा इंजॉय कर पाएँ चैटिंग वैटिंग में। Time to go. डोंट वरी, होता रहता है, एग्ज़ाम्स पे फोकस करना पड़ेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो आती जाती है यार। वही ये वीकेंड्स पे आना, हमें भी याद रहेगा कि हो गया भाई। एक तो कितना स्टार मार्क करूँ, बाद में आऊँगा। बस इन्हें टीचर का सिलेबस नीट हो जाता है। अरे यार टीचर पता नहीं क्या कहते हैं भाई, टीचर अपना सिलेबस बाद में एक बार में जब फोर्सफुली कहते हैं ना कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो दिक्कत है। चंदन भाई आओ कभी हवेंगी पे घुमा के क्या हो गया। चंदन भाई को भी वो भी, अरे तुम्हें चंदन भाई ही दिखे। Let's light it up. तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, आग से भस्म करने में। अरे हो गया भाई। Time to go. मार्क कर दो, बट मैं मज़ा आ रहा है। तुम सब भाई मज़ा करते हो, मैं डैमेज तो मुझे पड़े ना। स्टार्टिंग में आते तुम सब तो मैं बॉसेस करता, थोड़े डोमेन्स करता। ओह हाँ, मैं डोमेन्स कर सकता हूँ आई गेस। एक सेकेंड रुको। ए भाई कौन है भाई ये, रुको जाओ यार। Let's light it up. तुम लाइट अप करो, मैं जाऊँ पावर बढ़ाने में। मेरे को 7 स्टैचू ऑफ 7 नहीं दिखा एक भी। ये का Benny's adventure team, assemble! Or not. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Ow! Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. माइक कहो तो भाई, जो भी अभी तक नहीं किया जिसने भी, माइक कहो। ओ भाई, एक्वा का डिवाइस कौन सा है भाई? ये एक्वा का वाईफाई कौन सा है? इतनी जल्दी यहाँ आ कैसे गया भाई एक्वा? There you are, eavesdropper. The more... One with nature. Go in it! Fallen leaves. Adorn my I'll nights! settle this. Time to go. Teamwork is dreamwork! Light it up! Bird's call! Wind strider. The wrong test subject. Quietly now. You really know how to get me going. One with wind and cloud! I'll settle this longer. भाई इसको कहते तो भाई मचाना भाई, क्या मच्छी है था भाई। भाई 4 मिलेंगे मेरे को वो आर्टिफैक्ट्स, और 4 अच्छे मिल जाए ना तो मज़े आ जाए। भाई ये सांगे मुझे पता है ना ये कैसे देंगे आर्टिफैक्ट। मैं 5 कर सकता हूँ वैसे, मतलब 3 बाई कर सकता हूँ, मेरे पास 50 ऐसे ही है। ये तो एक भी एडिशन नहीं है, सारे के सारे ट्रैश है, मैंने देख नहीं Time to रहा, go. तभी मैंने उस पर कुछ कमेंट पास नहीं किया कि कोई अच्छा है कि कोई बुरा। The bird's call! Busted. Wind strider. One with wind and cloud! Time to go. Time to go. भैया मुझे रुक जाओ भाई, डार्कनेस भाई भेजते हैं, टेंशन मत लो। माइक को अरे यार क्या देगा भाई, कचड़ा देगा भाई वो, ये भी घटिया है, ये भी घटिया है भाई, कचड़ा दिया है। बिंकुम भी अच्छा नहीं दिया भाई, आखिरी ट्राई करते हैं बस। हाँ दे दिया भाई, देखो तुम्हारे जीमेल को मैंने भेज दिया है, डार्कनेस भाई चेक कर सकते हो। सनबर्स्ट का या सुन बस का लिखा है में।
भाई मुझे पहले ये बताओ भाई, ये एक्वा के पास कौन सा डिवाइस है, कौन सा वाईफाई है भाई? इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है ये यहाँ पे? सबसे पहले पहुंच रहा है भाई ये। Teamwork is dreamwork. One with nature. भाई लगता है पेटीएम ने ग्लिच कर दिया, कुछ चेक करना पड़ेगा। Light it up. तो मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, फिर देखते क्या होता है। रिपोर्ट करने के बाद देखते क्या होता है। मोमेंटम बर्स्ट। ओ भाई, अरे यार ये भी क्या कचरा देगा भाई, क्या देगा ये? इसमें एगमेंट मास्टरी नहीं है भाई, क्रिटिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। चैट पे है क्या? मतलब अब ये अटैक से भी फर्क पड़ता है क्या भाई? फर्स्ट अटैक कैसे होगा फिर? टीपी कर मॉन्स्टर्स में हूँ, 2 प्लेयर में पिछुआ कर दिया है मैंने। 2 प्लेयर सेकंड प्लेयर हूँ मैं, रिचुअल कर दिया है। रिचुअल कर दिया है भाई? अरे रिचुअल कहाँ हो तुम यार? प्रभु भाई कहाँ हो तुम? अब तो कोई एजेंसी नहीं है। मैक्स हो गया मेरा बैटिंग पास। लास्ट टाइम में ये कितना था मैडन, तभी अच्छा आर्टिफैक्ट्स आया था। This यही scenery is रिचुअल है wonderful. एगमेंट बस्ट का। Surely enough to convince anyone to become a wonder. हमारा तुम स्टार्टिंग में बता देते यार, ये तुम स्टार्टिंग में बता देते यार। ये अगर सोचो ये 5 स्टार होता तो कितना मजा आता यार। खरीदेंगे बैटिंग पास? अरे नहीं यार, बैटिंग पास अपने आप ही मैक्स है। वैसे भी कुछ ढंग का तो है नहीं इसके अंदर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। रेजिन से बस और क्या है, एक रेजिन। ये बॉक्स में क्या होता है? गिंग्ड टू नाइट एंड अगेंस्ट ट्रांसिशंस, ठीक है। इसमें है क्या कुछ? ये तो है, चलो प्रीमोज मिल जाएगा भाई। प्राइस क्या है इसका? ओ भाई भाई ये अमाउंट देगा तुम? Adventure team, assemble. Wherever in का this घर world I गिरी होना roam, पड़ेगा, ये सोच रहा I carry memories of my home. वो सेकंड बटन पे क्लिक कर, सेकंड बटन पे। It is the last link I have to the land of my birth. सेकंड बटन पे क्या होता है? बैटिंग पास के क्या? No one's joined me on an adventure in ages. Come on. अच्छा ये Let's go. वेपन ये उसमें है क्या, पेड में है क्या ये? कोई भी कोई भी वेपन फ्री के अंदर नहीं है क्या अपने? हो गया 7 के प्रीमोज किसके पास है भाई? मेरे पास सिर्फ 4 के हैं। Adventure time. All right. अच्छा पेड है भाई, तुम मैं वो भसम करने में लगे बड़े सबके सब। ये भाई ऐसी जगह जब आग लगता भी नहीं है, समझ नहीं आया क्या करना चाहिए भाई। वेपन तो फ्री में देना चाहिए। नाइक कर दो भाई, जो भी अभी अभी आए हैं नाइक कर दो। 1-2 वेपन तो फ्री में देने Whenever it चाहिए। snows, the world falls completely silent.
but I can sleep undisturbed. एक वेपन तो फ्री में दे सकते हैं ये। ओ भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट पे हूँ मैं। ड्रैगन स्पाइन हो गया कंपनी। ड्रैगन स्पाइन हो गया है आई गेस। वेपन्स मेरे पास मेरे पास अभी वेपन में ड्रैगन स्पाइन में एक तो ये है, 2 ये थे, मतलब एक महंगा था एक मैंने बनाया था, तो इससे मैंने रैंक 2 कर दिया है। इस वेपन को मैंने रैंक 2 कर दिया। एक मैंने बना लिया था और एक मुझे वहाँ से फ्री में मिल गया था। मैंने उससे ध्यान नहीं दिया था उस टाइम कि मेरे पास फ्री में एक है। मैंने वहाँ से कनेक्ट नहीं किया था मतलब, तो मैं आज कनेक्ट किया और इसको मैंने रिफाइन कर दिया 2 पे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है जो कि मैं एक्वा Allow me. वाटर वर्सेस फायर। वैसे एक्वा भाई की प्रोफाइल नहीं दिख रही भाई, इन्होंने हाइड किया भैया। भाई सबसे फाड़ू नेट है एक्वा का। एक बार चेक करोगे तुम स्क्रीन पे देखो पर भाई, एक्वा का डाटा स्पीड देखो सबसे बेटर है हम में। The publishing house has released numerous works that lay out military strategy I am in a invisible simple and pragmatic way. until someone Those are need my me। favorite. The Need scenery to buy. is wonderful. Surely enough to convince Mark है? anyone to become a चेक wanderer. इन्फॉर्मेशन नोट अ सिग्नेचर। ठीक है। अंबानी गाइड मी टू योर हार्ट। ओ भाई ये भी अच्छा है। ये अच्छा था ये देखो गाइड मी टू योर हार्ट। एक्वा भाई का है आई एम इनविजिबल अंटिल समवन नीड्स मी। ओ भाई अच्छा मेरा तो वही है, तुम्हारा में सिग्नेचर ही नहीं है, तुम फिंगरप्रिंट देते हो। Where did that come from? एक्वा भाई मानना पड़ेगा एक्वा भाई का डिवाइस भी और वो दोनों ही। कोई नहीं भी है क्या? और मैं देख रहा हूँ अब क्या किया जाए। मेरे पास वो भी नहीं है, रेजेंस नहीं है, मुझे बाय करना पड़ेगा रेजेंस जाके अभी। और अभी बाय भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई नहीं इतने 70 पोर्ट के। मैक्स है मेरा 70 पोर्ट पर दिन में देगा वो। कॉइन्स मैंने आज यूज़ कर दी ना सामान खरीदने में, फिंगरप्रिंट खरीदने में। बबेंग क्या होता है? तो स्ट्रीम कितने घंटे की होगी? मैं 2 घंटे बाद मुझे वो भी करना है, आज वो भी करना है। बॉस मारते हैं टाइम पास किंग ये। ओके बॉस मारेंगे थे, कोई बात नहीं। टेलीपोर्ट हो बॉसिस पे। Wherever in this world I roam, I carry memories of my टीपी home को मैं आ जाऊँगा। Away I go. displayed. It is the last नंबर link I have. 2 टीपी को, नंबर 2 के नंबर 3 टीपी को मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास जिस भी बॉस पे जाओ तुम। Time to go. कुछ ऐसा बचा नहीं है मैं यहाँ पे गए के लिए जो कि इस बॉस को भी तो मार ही चुके हैं। ये कुछ मैसेज भेजा क्या? This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. ये कौन सा मिशन है?
अम, अम, ये कौन सा मिशन है और कहाँ पे है? बाबेंग देखेगा, दिखाओ। प्रभा भाई वंगड क्वेस्ट में कहाँ है? ये कौन सा, ये कमीशन है, स्टोरी क्वेस्ट, आइकन, ये वंगड क्वेस्ट, सुमेर रूट, चाइल्ड फॉरेस्ट। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. अरे अरे मैं वो पूछो कौन सा मिशन करनी चाहिए? डिफीट द ट्रेजर होल्डर्स एंड ऑब्टेन द की, ये कौन सा Allow है? me. Ta. भाई नाइक को नाइक को भाई छः के 6 बंदे नाइक कर दो जल्दी से। आई एम बाइक, आई एम बैक, वेलकम बैक बड़ी। हर्ष भाई कैसे हो? Time to go. मेरी सेना मेरे पीछे पीछे आओ। आज हमें वो, ओ भाई हर्ष भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, हमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो भाई। इंस्टाग्राम पे फोटो भेजो Time to मुझे। go. डैम भाई क्या क्वेश्चन किया मैंने। तुम्हारी साथ में होनी चाहिए फ़ोटो, ऐसा नहीं हो कि तुम कह रहे हो बट फ़ोटो भेजो अपने साथ। अब यकीन कहूँगा भाई, ऐसा तो मैं भी कह दूँ भाई। बताओ दिखाओ, हमें सबूत चाहिए, हमें जनता सबूत मांगती है। One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. अरे अपनी हो उसकी फ़ोटो भेजोगे भाई, किसकी फ़ोटो भेजोगे? Hold the line. This is long overdue. ओ भाई The wind knows me. इनका तो भूत बन जाता है यार, इतनी तगड़ी टीम है अभी। नाइट बोट से गुजरा इसी नाइट बोट कहाँ गया यार? नाइट बोट तो कुछ कहीं नहीं गया, तुम बेचारे को डांटे। आप कौन है गया? सब तो मर गए। Brings a smile to हमें की मिल गई। Time to go. अच्छा हाइट पे थोड़ी, इसको निकाल दे क्या? कौन है ये? ओह भाई एक सेकेंड। अरे 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 परवा भाई, प्राइवेसी भी कुछ होती है भाई। तो भाई किसी की किस्मत तो अच्छी है भाई, अच्छी बात है हर्ष भाई। फीफा पता है क्या? हाँ फीफा पता है। चलो तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है यार। आई एम हैप्पी फॉर यू भाई। किसी को तो सुख प्राप्ति हो ये जिंदगी में। फीफा गेम है, डैम मैं गलत तो नहीं कह रहा। फीफा जो है एक तो फुटबॉल का है।
मेरा आशीर्वाद दूंगा भाई, दे दो। रुको, ये इमोजीज कहाँ से आ गई? ये दोनों इमोजीज, वाटर एंड ये फिस्ट का आशीर्वाद भाई दे दो भाई। कैसे देंगे आशीर्वाद का? कोई इमोजी है क्या? नहीं, आशीर्वाद का कोई इमोजीज नहीं होता ये। कहाँ है ये? ट्रेजर कहाँ है? ट्रेजर कहाँ है? वो ट्रेजर कहाँ है भाई? माओ To survive hardship, you must prepare for hardship. भाई किसी को बताए कनेक्ट ट्रेजर कहाँ से होगा? हैं हैं तुम एक अच्छी हो। अरे यार फियर मी, अरे तुमसे कौन फियर करेगा पर भाई। हाय जोकर भाई, वेलकम बैक। कैसे हो यार? नाइट बोर्ड ने हाइड कर दिया चैट में, समझिए क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन है उन वर्डों पे जो तुमने यूज़ किया। अरे ट्रेजर कहाँ है भाई ये बताओ? 60 60 20 20 90 90 80। ओ भाई अच्छा है। अरे ट्रेजर कनेक्टेड कैसे तुम खाए भाई? भाई ट्रेजर कहाँ है भाई? वो इसके ऊपर तो ना है। बाय बाय एक्वा ब्रो, गुडू बाय मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। Your SQN icon or just name in the past, according to her, she discovered in the course of her research that there was treasure buried here. That treasure is located beneath the giant golden tree or in the mid of Ningju Pass. जाइंट गोल्डन ट्री कौन सा है भाई? वो बड़ी गोल्डन ट्री कौन सा है? अच्छा ये तो है। हाँ हाँ वो दिख गया आप। ये तो है, एक ही है। Don't want to be sealed back up. कौन मरे? कौन? ओ भाई तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? One with wind and cloud. थोड़े हटाओ भाई, बहुत सारे तो। Into the wind. भाई मेरे पास कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है अभी। एनिमोट कैरेक्टर बेकार है। आई से फायर चाहिए था मुझे। कहाँ गए सब के सब भाई मेरे फ्रेंड्स? अच्छा यहीं पे हो गया तुम सब भी यहीं तड़प हो क्या? भाई फूड का ऑप्शन आ गया। स्टडी विद मी भाई, कैसे हो? वो मेरे पास मैं भूल गया, मेरे पास एक और कैरेक्टर आ गया है मुझे कि वो भी है। हमारा जो फ्रेंड आए थे, क्या नाम था उनका? वो बेचारा डूब के मर गया। अब यहाँ ट्रेजर कहाँ है? Follow the wind. The wind knows me. वो मैं अभी मुझे वो दिखा था, वो जो नया वो अटैक नहीं था ये इसका ड्रैगन स्पाइन स्पेयर का,
वो जो शार्ट सा गिरता है कुछ, वो शार्ट दिखा था मुझे, मैंने अभी नोटिस किया। Into the wind. Time to go. गो गो गो, अब जाना कहाँ यहाँ से, ये तो बताओ कोई। ओह ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे यार ये। अब क्या करना है? This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone Down to the become a tree. wanderer. भाई कोई खड़ा भी तो यहाँ पे। इस ट्री के नीचे नहीं है? हाँ फैनी भाई वेलकम बैक। किस ट्री के नीचे है? इस ट्री के नीचे ही है क्या? जोगा भाई कौन सा ट्री के नीचे बताओ, मैं देख के आऊँ एक बार। वो ये का यहाँ कहीं डिक का ऑप्शन आया था। Fateful offering. नेम नेक्स्ट ट्रेजर कहाँ है? Time to go. वो भाई माइक कर दो भाई, माइक करो। जिन्होंने नहीं किया अभी तक माइक करो। बाय बाय प्रभव भाई, बाय बाय पुंग। पुंग मैंने अभी किया था भाई, 20 पुंग कर चुका हूँ मैं। तुम थे नहीं ना उस टाइम में, तो देखा होता तुमने। Time to go. भैया मेरा चैट, तुम्हारा चैट क्या है मैंने देखा नहीं। भैया मेरा ट्रैक कहाँ कैसा है? तुम्हारा ट्रैक कैसे, कौन सा ट्रैक? आई एम बैक। तुमने मुझे कोई ट्रैक भेजा है क्या? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This तुमने blade, ट्रैक मैंने कोई देखा नहीं तुम्हारा it कोई। is the last तुमने link इंस्टा I पे भेजा have क्या? to the land of my birth. भाई 6 बंदे देखो, 6 के 6 नाइक कर दो यार। नाइक का टारगेट है 8-10 नाइक तो करवा दो यार। एक तो संगा ये ना मैं हार्ट। ओके भाई कहाँ जा रहे हो जोकर भाई, अभी तो आए हो तुम। एक तो मैं ना टारगेट ये शो नहीं कर सकता, इसमें कितने नाइक हुई सब शो नहीं होता है। अच्छा थैंक यू ब्रो। लाइक करते आगो यार। ट्रैक कहाँ भेजा तुमने ये तो बताओ, मैंने तो देखा नहीं ट्रैक यार। तुम बोलो ट्रैक भेजा मैंने। आई एम बैक दिखता है उसके पहले, कोई तुमने कोई मैसेज ही नहीं किया। कहाँ भेजा तुम ये बताओ ना, इंस्टा पे भेजा या डिस्कॉर्ड पे भेजा तुमने? और अपनी बीजीएमआई आईडी एक बार फिर से भेज दो यार, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं किया शायद। एक बार बीजीएमआई आईडी फिर से भेजो अपनी।
भाई गेम डाउन, भाई तुम कितने दिन से गेम डाउनलोड करो भाई? कंग भी गेम डाउनलोड किया, आज भी तुमने गेम डाउनलोड किया जेंशिन का। अम, भैया गेम डाउन, हाँ एक सेकंड है। जब ना मैं आता हूँ तब भी 7 तो 6 की वोटिंग वॉचिंग हो जाती है। अच्छा, बड़े लोग जब मैं आता हूँ तो 7 और 6 की वॉचिंग होती है। ये तो है भाई जो कि भाई वो जस्ट स्टडी विद मी, वो जस्ट 10 टू सिंगल प्ले में जा वाईफाई में फ़ोन आने का तो कहाँ समझेंगे। अरे नहीं यार अरे नहीं, पता है इन्होंने कल 50 या 48 GB का कुछ गेम डाउनलोड किया था मेरे को, कोई गेम डाउनलोड किया था। बाय चंदन भाई। अब ना इन्होंने फिर आज कहा तो मैं पूछा कि भाई कौन सा ऐसा गेम है जो तुम हर दिन डाउनलोड करो। मैं ना नक्की, तुम तो नक्की हो भाई, ये तो है। 58 GB भाई ही भाई। अरे ये 2 मिशन मेरे ना मूड खराब कर गए भाई। सुमेरु के 2 मिशन है जो मेरा सर दर्द बने पड़े हैं। जेंशिन इम्पैक्ट ही तो करो, मुझे पता है भाई। ये कहाँ का मिशन है? वही कहाँ का मिशन है? नेविगेशन कहाँ पे है ये? गो टू, वो ये कहाँ पे है, किसी को बताइए। सुमेरु का आइकन क्वेस्ट सुमेरु। यार आइकन क्वेस्ट तो भाई बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ टाइम मूव हुआ, मैं मिशन कर तो रहा था। टीपी कौन सा वे पॉइंट पे गए? हाँ इसी पे गए। हाँ देखा है मैंने, जेंशिन थ्योरी है, मैंने उसमें किया है, थोड़ा बहुत किया है। आइकन क्वेस्ट में पूरा स्टार्टिंग से नहीं करना है, रहने का नहीं जाने का यार। ये तो है, वो ये क्या है? सब टाइम मूव। हाँ मैंने देखा उसमें टाइम मूव है भाई। उसकी जो तबीयत ख़राब हो गई है हमारी बेस्टी भाई, ये शुरू से स्टार्ट हो गया। Why does Paimon feel so tired after so much sleep? ये पूरा क्वेस्ट शुरू से स्टार्ट हो गया क्या? We should go meet Dunyarzad right away. अरे यार ये मैं देख चुका हूँ भाई। जोकर माय फ्रेंड। अरे यार यही तो मज़ा है भाई। हर बार फिर शुरू से करना पड़ता है क्या? और हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, ये तो मैंने नोटिस किया है। हर बार शुरू से भी होता है, हर बार कुछ डिफरेंट भी होता है, इससे सेम नहीं होता। Good morning, Dunyarzad. ये Sorry to theory keep you waiting. Not at all. I arrived early. इसकी आवाज़ थोड़ी वैसी है, भारी भारी। Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's इसने no need 6 to को worry. मतलब 6 बार माइके जिंदा Shall हुए we go? मतलब 6 बार मरे, 5 बार मरे Yeah, आई मीन। let's get going. Traveler? ट्रैवलर नशे में हो आप? भाई मैं एक बात बताओ, देखो माइक को भाई आज क्या हो रहा है यार?
ये तो है यार, आज हो गया स्ट्रीम पे, Sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's आज festival. स्ट्रीम में बंदे नहीं आ रहे नहीं। Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a choice. All these boxes look the same. It's not that simple. Each box contains a random flavor. Good night, It's up study to with the me, luck bhai. of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruits, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? It'll help me choose. Paimon wants to eat the suns. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? एक ही ऑप्शन तो आया सबने। Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon knew he always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah, wait. How did you know? अच्छा ये मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्या बार Tell me बार? that you already knew which flavor was in each box. What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? सर Or मैंने some आपको kind नहीं of बोला, magic ठीक है trick? स्टडी विद मी This भाई। is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? भाई ये कैरेक्टर भी अच्छा है। Hey, where are you going? भाई मुझे एक बात बताओ, बस दी टेंशन में भाई ये क्या है? Did you see something? Us leaving Junior aside without letting her know is kinda rude, you know. भाई आरडी मेरा है, गाइडेंस शोगन जो है ना, तुम उसको What are you looking for? Why are we coming सोचो here? मत, तुम आएंगे नहीं है। मुझे ये मत कहना प्रभु भाई कि मुझे एक एक कैंडी फ्लेवर बताना पड़ेगा उसको। Traveler? आगे से वैसे तो वो आईडी कहते हैं जो कि भाई That's... नहीं है, ये गलत है। हिमिको आईडी बोथ आर माइन। येंगन ओंसो माइन। हो भाई Look! That's... Isn't that Junior's हाँ, house?
सारे लोग मिंके मारो इसको। अरे भाई कैसे भाई? What's happening here? Why are there two Junior Zods? You already know that this isn't your first देखो भाई, Sub-Zero's मुझे दोनों festival, हाथ में don't गड्ढों की you? प्लेट चाहिए, गड्ढू नहीं चाहिए। नो नो ब्रो, ये नहीं भाई। I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? हिंट चाहिए क्या? हाँ बताओ बताओ। मेमोरीज। This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? AI Your memories are still scrambled? अपने Try आप your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting Okay, me was the okay. real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for Nick, it was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. क्या बाकी दो बंदे कौन है भाई? चैट में अपना नाम वाम कुछ दर्ज करो, अटेंडेंस दो अपनी। A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Junior Zod you were just with is different from the first Junior Zod you met. That first Junior Zod is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. मुझे नाहिदा कैरेक्टर वैसा चाहिए। You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. भाई मैं I can only 5 give या you 10K पे surface कर level दूंगा। help, like bits of 2 मिनट का information टेंशन and मत subtle लो, 5 hints. 10K पे भी कर दूंगा। तुम 10K For the करवा rest दो या of the 5K time, करवा दो। I'll be doing all I can to slow Are you down Junior Zod's illness. Shinin Bennett Yang Kazua? She looks Hey, like you. she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. यार मेरे पास सिर्फ You sure love 40 to use फेमस weird बचे हैं, analogies. जो कि भाई मेरे पास सिर्फ 40 फेमस बचे हैं, मैं वेस्ट नहीं करता था। Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? हम तुम सबको पार्टी देंगे भाई। When you enter the stage console, you can choose any text and enter them to process and wounds enemies of the text and may yank the new interference is what you may
Submit the text as okay. The moon illusions. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. बाय बाय जोकर भाई, नाइक कर देना. टेक केयर, गुड नाइट. That doesn't sound right. That doesn't sound right. मैंने लास्ट टाइम जो चूज़ That किया, doesn't sound right. I need. या मैंने लास्ट टाइम भी यही चूज़ किया था, इसमें फिर मना कर दिया था. That doesn't sound right. अब भाई ये क्या है? The इंटरप्ट Grand Sage said. और डेजा वू. भाई कैसे चुनूंगा मैं? सारी My राइट mind नहीं. feels exhausted. वो भाई ये किसने दिया है फूड मुझे? एक मिनट. अरे मेंग किसने दिया था ये? योई मिया भाई, सेंटर योई मिया, वेंटी, निशा. इसका तो नाम तक नहीं मुझे याद है. ये पता नहीं कौन है. पाइमो पै फिशन, यूजिन, रोज. भाई नहीं करो. आज सुबह तक मैं भी कर दिया. आज सुबह तक मैंने लॉगिन भी कर दिया. सही है भाई. आईडी बताओ अपनी. 11-16 होने के बाद बताओ आईडी. भैया आपने सुबह गेम की वीडियो में सब्सक्राइबर पर वीडियो बढ़ेगी. ठीक है, सब गेम्स की वीडियो डालेंगे यार, कम से टेंशन मत लो. Everything is negotiable, except overtime. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? अच्छा, मुझे इसे करना ही पड़ेगा क्या? टाइम मूव, That इंटरप्ट. should be it. The flow of time is. A time loop. We've given similarly wrong answers in the past. A pity. रोबोट आईक्यू टेस्ट. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. भाई टाइम मूव भी तो है Time's just भाई. repeating itself. A simple time loop जैसे can't ना explain some of कार the गेम्स, phenomena. गन गेम्स, मतलब You two are still सब missing गेम्स. a ओके. lot of अरे मैं information. सारे गेम्स खेलने के लिए तैयार हूँ, बस व्यूज़ आते हैं. आज लाइव स्ट्रीम पे व्यूज़ नहीं आ गया वैसे देखा जाए तो. 29 आए अभी तक सिर्फ. ये 3 मिला के 32 हो जाएंगे. 33. हिंट टाइम 1 सेकेंड. Aside, 1 सेकेंड भाई, the 1 सेकेंड. Sabzeruz festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry. 1 मिनट मुझे फिर से ट्राई करना है. मैं कर सकता हूँ क्या ये? Let's think मैंने about टाइम our को ऐसे current सबमिट कर दिया था ताकि कुछ आगे तो बढ़े. प्रोग्रेस में Safe to चैट पढ़ा था verify उसने. we have to escape the samsara of the Sabzeruz festival. तो ये मैंने शूट तो किया था. उसने किया था नॉट अ राइट आंसर. The Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive ये than यार, sitting ये here sad हुआ भाई. scratching our heads. यू आर ड्रीमिंग. Why don't भाई ये गलत है भाई. 1 सेकंड पढ़ो, 1 सेकंड में. ओके, यहाँ से चैट स्टार्ट है. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? You are trapped in Sub-Zero Festival. she's You feeling a and your little mind low. inside the time loop. I see.
ठीक है, not you. Did you come back to buy You are something? dreaming. I guarantee the And the freshness of my dream master products. is I harvested Neong- them from the Neong- forest just yesterday. वो चैट पढ़ा Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. To put it another way, if you The really Akasha think terminal about is it, making everyone was dream. yesterday truly yesterday? Seb Did Zeus you festival. actually come back from the forest yesterday? ओह मैं समझ गया, What kind of philosophical nonsense is this? Are you You two do- daydreaming? जिससे वो बहस करी थी रेड कपड़े वाली जो अपनी. Didn't you know that no one dreams in Sumeru? हाँ हाँ मैं Go समझ गया. somewhere else if you want to find someone to daydream with. Not your day. भाई इससे प्रोग्रेस कैसे होगी ये तो मैं समझ गया. Actually has a point. एक नेटवर्क एरर की वजह से पूरा गेम डाउनलोड करने पड़े, दोबारा से शुरू हो गया. कोई बात नहीं, हो करूँगा भाई, डोंट वरी. True. It's so weird that people Sage is here creating a don't new dream. god using Why is that? Jen. If this all Jenna really and were Izzy. just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. भैया आपका बने क्या चीज़ भाई, किस चीज़ की बात करो तुम? जेन एनर्जी कम टू माइन एनर्जी. वो एक सेकंड, मैं क्या ये कह रहा हूँ, ये उसकी तरह नहीं है जो तुमने वो देखा है Oh, it's you two. वन पीस रेड मूवी रेड जो है Compelled to compliment me in person. जिसमें वो होता है, मैं वो नाम याद नहीं आ रहा. वो कौन सा कैरेक्टर होता है जो, नहीं यार नहीं बना, स्टडी विद मी भाई, बनवा दो प्लीज. Ooh, I knew it. I told you. The god's फूटा divination होता है is क्या वो, highly क्या नाम था उसका, मैं नाम accurate. भूल You गया. just hadn't fully understood its significance yet. फूटा तो होती है शायद. देखा तुमने वन पीस रेड मूवी? नाइक कहो भाई That's यार. exactly why यार we आज came व्यूज back. नहीं आया यार. Help us भाई better देखो understand it. Help you better understand आधे it? एक घंटे की स्ट्रीम बची है. कहाँ है Well, बंदी? that isn't exactly what I excel at. So you're admitting that you don't have a प्रभव clue? Anyway, what kind of situation did you get into? डेजा ब्रू सेज वर्ड की है. ओके Huh? Hold on a second. What you just said. Are you serious? Does that I knew you weren't going to believe it. marvelous, truly marvelous? अरे भाई I believe you. भाई मुझे चाहिए Recall the नहीं ये interpretation क्या. of your divination. स्टडी विद The मी भाई, moon, पूरा घर illusions Mind pain. and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is Akasha beyond the Terminal. reach of mere. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune telling is just fortune telling. It's no good for practical problems. भाई स्टडी विद मी कुछ क्या है Haven't भाई. made any progress. Who else can we talk to? Emma remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. आयो वो जीएफ की बात कर रहे भाई तुम्हारे. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say?
need to say something convincing. People forms made do not dream. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? अरे मैं रीड कर रहा था यार, क्या सबमिट कर देते हैं. Tell her, Traveler. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right. So this is the situation. मैंने डीमन स्लेयर्स 8 क्या जापानीज में देखी है. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. बीजमाई दिन में खेलेंगे 2 बजे. At first, और मुझे ना अपनी आईडी भेज दो. Talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Junior's... यार ये समसाया वाला फेस्टिवल अच्छा तो है, बट यार वेस्ट अच्छा है, बट थोड़ा कहाँ जाना है यार, 1 मिनट देखने दो. जेडियन इम्पैक्ट, ये कौन सा जेडियन, कौन सा जेंशन इम्पैक्ट, व्हाट एज टू प्ले. एज अपनी डाल दो 18 से अबव ही रखना. मे भी कुछ चेंजेस हों जो कि 18 से अबव में यूज़ हो. रिकमेंडेशन में टाइम सेट कर दे कि तुम इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते, कुछ ऐसा. Nahida, I brought a friend. Are you busy? दहिया नो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. राम 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 भाई. It won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. भाई मैं बताऊँ, मुझे ना फंकी स्टाइल ज़्यादा पसंद नहीं आता है. Real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? स्टडी विद मी भाई, ज़्यादा टाइट मत करो नहीं तो हाइड हो जाएगा. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. People from Sumeru do not dream because they are in a dream. Oh. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, Deya. she's lying down here, isn't she? How's सही she है, doing? but Her भाई आई एम condition's really 13 year old. bad. She's basically in a तो coma. 13 मेंशन कर दो, उसमें क्या How did you है, know कोई she दिक्कत was नहीं है. here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. मैं चैट देख चुका भैया मैं. So, you think the sages are behind this? Yeah. स्टडी विद मी they've भाई, always मैंने been बोला against था us. मत करो नहीं तो वो हो Wouldn't जाएगा, surprise डिलीट हो me जाएगा if they're चैट. using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. भैया Aside आप from एंडू the को जानते हो क्या? Dental नहीं, Icon, मैं नहीं the जानता. Academia sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know.
अभी है यार, अभी एक घंटे का टाइम है हमारे पास। आसान तो है भाई। Right. Didn't you awaken our memories No fight, using nothing, बस something करते that जाओ। looks like a knowledge capsule? That means you must know something मैं भी about the 13 हूँ भाई, तुम Akasha. 12 बता रहे थे पिछली बार। स्टडी विद मी, तुम अपनी The एज Akasha 12 बता रहे relies थे। on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis can do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. हाँ, ये तो मुझे So, पता है। this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait, ओके ओके मान गया भाई, कसम वसम मत खाएगो यार। I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the अच्छी बात है भाई, sages 7 enter स्टैंडर्ड में तुम्हारी new लाइफ knowledge मस्त है, अभी तुम into एंजॉय कर the सकते हो। Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? बीए प्रोग्राम 3rd ईयर। Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. भैया बीजीएमआई की आईडी है मेरे पास, बीजीएमआई की आईडी तो है भाई, अपनी आईडी बता दो एक People बार। in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? अब भाई 2 स्क्रीनशॉट हो गए। अब मैं पे देखो What's क्या happening किसी right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. ये तो है भाई। You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? भैया ने बोला था कि बीजीएमआई का Just think टूर्नामेंट about होगा। it. भाई If you मैंने could कब कहा combine the बीजीएमआई का knowledge of टूर्नामेंट every होगा single यार। person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, भाई चैनल I'm getting मोनेटाइज हुआ evidence and नहीं, अभी तो नहीं exposing हुआ this भाई। whole thing to the public. नायडा इताची की तरह किसी को भी गेंजुत्सु में फंसा सकती है। सिजुक टोकन देन गाइडेंस टोकन। अरे भाई ये सही है। Huh? What is it? भाई इसने ओवर पावर यूज करेंगे ना अपना, तभी तो इतनी श्रिंक हो गई है। Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound
of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? It's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. लोग लगे भाई मुझे लगा था धीरे धीरे डार्क हुई थी ना स्क्रीन, मुझे लगा था सो जाएंगे. है फिर से ना उठाइए फिर. भाई डेजा वू वाला सीन बहुत अजीब है भाई. कहाँ हैं हम? Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? थैंक यू सो मच भैया. आई लव यू सो मच सर. सर भी गए हो, भैया भी गए हो. भाई क्या ये डी में आकाशा उतारने से कुछ नहीं होगा. सॉरी भैया. अरे ये क्या है भैया? इस सीन स्किप सताया है. स्किप सताया है. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. भैया आप मेरे चैनल को जानते हो? एंड वाई द स्काईज ऑफ ट्रेवल्स आर फेक. There you are. I've already taken care of those अभी kidnappers. तो वंडर My भी lady, did आएगा. you get hurt? यू विल फाइट अ गॉड एंड वाई द स्काईज ऑफ ट्रेवल आर फेक. भैया आप मेरे चैनल को जानते हो? नहीं. रोबोट इंडियन गेमर. अरे ये तुम्हारा चैनल है भाई. आई हैव योर चैनल भाई. ऐसे तो Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've नहीं. only फ्री used फायर it नहीं to खेलता fight भाई. a countless number of battles. इसमें जाए नहीं है भाई. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, बीजेमआई खेल what do सकते you हैं. think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I
have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Forget it. Go and do your thing. You are in samsara. मुझे पता है. भाई ये क्या कर रहा है भाई? ये स्टोरी बड़ी लॉन्ग है यार. एक ही चीज रिपीट होते हुए कौन देखना चाहेगा भाई? It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Hyman's brain is already shut down. हाँ कैट that character scene skip होना मत skip हो भाई देखो मजा आएगा. Things you will learn tomorrow. सीन से skip मत को जितना ज़्यादा देख सकते हो Get some देखो. good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day. मुझे मजा नहीं आता क्या टाइम वाला में. We've really gotten to अरे मजा तो आ रहा है. Let's go back to our मेरे को उसकी दिक्कत नहीं है यार. आज मैं आधे स्ट्रीम में प्रोग्रेस नहीं हुआ यार. ये दिक्कत है ये. आज 35 आए भाई अभी तक. ये दिक्कत आ गई मुझे. इस टाइप में तो मॉर्निंग तक सिर्फ 60, 45, 50 तक हो पाएगा. वॉचिंग कम आई आज. We're still in the same day. Nahida, you already knew last night that we रोबोट didn't टेकर break डुक out डुक. of the ये मीनिंग क्या samsara. था मैं समझ नहीं Why पाया did इसका. you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. अरे नहीं स्किप मत करो कैरेक्टर इसको देखो पूरा मजा आएगा तुम्हें. Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. 2 In दिन other वेट words, कर. if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh yeah, you're right. Gosh, how did we पॉजिटिव not चीजें करते हैं notice नेगेटिव that? नहीं करेंगे. In a simple time loop, people's physical
conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, ये क्या समझ नहीं आया यार, ये कैसे हुआ है भाई। मैं आज प्रीवियस स्ट्रीम जो गई है 2 दिन की 100+ व्यूज़ आए उसमें, उससे पहले वाले पे भी सही व्यूज़ आए, उससे पहले वाले पे मीडियम थे, फिर मीडियम था, फिर सही था, मतलब एक एवरेज जो था वो 30-40 पे जा रहा है, आज कम क्यों है ये समझ नहीं आया मुझे। तो भाई उसे हटाएंगे कैसे, ये कैसा सिस्टम है भाई। इसमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करो यार ये बताओ। पता है ये चीज़ देख के ना मैं तभी आपको चैट ओपन करो कि ये दिख जाए कि क्या वॉचिंग क्या है, मतलब व्यूज़ कितने आए अभी तक। इसके चक्कर में ना मैं गेम पे उतना इन्जॉय नहीं किया मैंने इतना। हाँ ये क्या है? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. The day of the festival seems to be in a perpetual samsara. अगर मैंने आज होंकाई इम्पैक्ट नहीं खेला यार, शिट में भूल गया। The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. भाई यो तो हो गया। If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. If all our memories of a day are erased at the end, अरे ये वाला चूज करो भाई, मैं क्या the करूँ। beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the तुम्हारी manifestation चैट of the इग्नोर नहीं God करेगा of भाई, wisdom's मैं power. चैट तुम्हारी एड It किया हूँ। compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. अभी होंका इम्पैक्ट अभी नहीं कर रहे हम। That doesn't sound right. I need to... That doesn't sound right. I need to care... मुझे रॉन्ग आंसर ही देना क्या? क्या था मेरा चैट देख चुका भाई तुम्हारी चैट। Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all. क्या तुम चैट टिंगेट करो क्या अपनी? अरे इमोजीज नहीं हुआ भाई, तुम्हारा इग्नोर नहीं हुआ भाई, Why टेंशन don't मत you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. Time to go.
There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? भैया आपने 30 मिनट बचे हैं बीजमाई दिन में होगा भाई कम होगा आज थोड़ा होगा That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? भाई बीजीएमआई में व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि बीजीएमआई में पहले से इतने सारे वो है ना YouTube चैनल तो उनका फायदा नहीं है. I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Lightning terrified! अपने दोस्तों को बोर्ड के चैनल सब करे और लाइव आए तब देख करेंगे बीच में ये भी है सही. This is it. अरे भाई ये क्या This is a wooden training dummy. उसका मतलब ये है कि बीजीएमआई में व्यूज नहीं आते हैं Those are the result of several days worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is that really impossible? What if they use some क्या fancy पता है भाई machine मुझे to बताओ carve पहले. every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training.
Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory स्टडी विद मी भाई यार deletion also क्या बात कर रहे हो wrong? तुम्हें पता तुम्हारी चैट डिलीट हो जाती है But फिर तुम्हारी at चैट least डिलीट we've होना reached स्टार्ट हो some जाएगी other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. अरे नहीं अभी वो डिलीट नहीं होगा बट मैं सेट कर सकता हूँ ये बात यार मुझे समझ नहीं आया Criteria for certificate exams are स्लोली straightforward व्यूज enough. डिक्रीज हो What गए it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. और ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं है कुछ तो दिक्कत है समथिंग इज रॉन्ग भाई ये तो यार मोनेटाइजेशन 2000 घंटे और उस टाइम चाहिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. मैं तंग चेक करता हूँ क्या चेक को मतलब क्या चेक करना भाई Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! कौन सा गेम खेलना है भाई स्टडी विद मी भाई बताओ About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand.
Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go! We don't have many more festivals to waste. Hurry and find the truth. एक सेकेंड, ये कुकी तो मैं बहुत पहले बना था यार, जितना मुझे याद है। ये तो रिपीट टैंक कास्ट दिखा, इसमें अपने वो टाइम रिपीट करो जो कि मैंने किया था बहुत पहले। Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods Oh, have ये already मैं arrived कर at चुका Port हूँ भाई। Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. भाई ये क्या करवा गया हम Looks सबसे? like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be भाई able to पाइमन help केयर you. तो करता है भाई। Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together. मेरे में वॉचिंग 3 की, मेरे पास भी 3 की है भाई। Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, कोई जियो वॉचिंग नहीं है। careful. ये तो है यार, वॉचिंग 0 नहीं जा रही, पर ये देखो ना 40 हुआ है भाई। वही एक बात समझ नहीं आई, ये सब मैं किया हूँ भाई। Memories. यार मैंने जो चीज़ की भाई, कुकी शिनूबी हुआ इस गेम, इसे आई मीन इस क्वेस्ट के स्टार्टिंग में बना था भाई मैं कुकी शिनूबी, जब मैं इसमें आया था सुमेरु फेस्टिवल के क्वेस्ट के अंदर। ये रिपीट हो गया है भाई। 2.88 GB डन भाई, बहुत ज़्यादा है ये। Paimon would never see you again. You just disappeared. भाई ये सच में रिपीट हो गया यार। ये मैं मिशन में मैं ये कर चुका हूँ, जो ये वापस सीन दिखाए मुझको। You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day.
okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside! Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking! I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages! डिस्कॉर्ड चेक कोई बाद में डिस्कॉर्ड में चेक करूँगा भाई बाद में और मुझे नाइट बोर्ड में भी 2-3 चीजें ऐड करनी है Once yesterday, but okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence.
an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now! Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. बाय प्रभा भाई गुड नाइट Right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? That doesn't sound right. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. 10 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से 10 मिनट बाद बंद करेंगे फिर कल करते हैं स्ट्रीम Hey, where are you going? भाई मैं काजुआ था जितना मुझे याद है मेरे पास काजुआ था वो काजुआ क्या हो बाबरा थी कुकी की जगह ये कुकी कहाँ से आ जाएगी बाबरा Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. ठीक है पवन भाई मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दूंगा बीजीएमआई में रोबोट नाम होगा उसमें भी दो बजे The dance दो of बजे दिन में Sub-Zeros is about to begin. हाँ I'm 2 going to go बजे watch या एक काम को तो 2 बजे आ जाओ 2 बजे
Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away! Awesome! What is it? Paimon wants to know! Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth! अरे भाई ये बहुत लंबा क्वेस्ट हो, ये ना बहुत अजीब क्वेस्ट है भाई। मूड जिसे कहते हैं माइंड वेस्ट करने जैसा क्वेस्ट है भाई। क्वेस्ट है इंटरेस्टिंग, टाइम स्पेस इसमें रिलेटेड है तो मज़ा तो आएगा ही। You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay, first off, have you discovered the hidden truth? People in Sumeru don't dream. What is... I can't seem to cohesively piece everything together. I can't seem to cohesively... I can't seem... I can't seem to cohesively piece everything together. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. The moon, illusions, and lies. What are they? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream, or rather, the Akasha is taking their dreams from them. We are all in a dream. It is... We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. The day of the festival seems... Those spaces remind me of... dreams. Like the one I had in the Avidia Forest. Except these have no sign of human presence. That doesn't sound right. I need to carefully think. Those spaces remind me of... dreams. Like the one I had in the Avidia Forest. Except these have no sign of human presence. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. The day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. 4 बजे गए थे फिर। That doesn't sound right. I need to That doesn't sound right. I need to carefully think things through. That doesn't sound right. People in Sumeru think they don't dream,
But the truth is, the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of a gnosis to... That doesn't sound right. I need to care... It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It is the manifestation of... Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we... That doesn't sound right. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing, but as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? That doesn't sound right. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. That doesn't sound right. I need to care... I can't seem to अरे नहीं, मैं इस टेक्स्ट पे फोकस करूँ अभी यार, मैं देखूँ कि कैसे हो गई है। Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zerus festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zerus festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? हाँ यही है मेरी आईडी। Very good, Paimon. मैंने दिखाया तो था स्ट्रीम पे। Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I?
They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali, Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the... Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? बस खत्म होना है स्ट्रीम 5 मिनट को 5 मिनट को स्ट्रीम इतनी भाई उसके बाद हम भी गुड बाय कहेंगे रुक जाओ तुम have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Celebrate the birth of that god? Could it mean? किसकी बात कर रहे हो तुम? ये जो बाहर है वो? Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon.
The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. नहीं ऐसा कुछ Puppets नहीं. are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Ella's. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the Sage's fault, and there's... I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be... To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming?
After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the Traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah, saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the wholesome Zeru's festival, right? Pretty. Let's go ask him some questions, shall we? भाई आज के लिए इतना काफ़ी है भाई. हो गया भैया, सो भैया फॉर द बैड्स वर्ड. अरे नहीं, कुछ नहीं होता. बाय बाय, गुड नाइट. आज का हो गया भाई. चारों बंदे जो भी देखे माइक कर दो. कंग मिलते हैं, कंग कंप्लीट करेंगे इस क्वेस्ट को. बहुत लंबी क्वेस्ट है ये, देखते कैसे होगी. बाय बाय, गुड नाइट. बाय बाय, स्टडी विद मी भाई. गुड नाइट.